So, hello students. Again, this is Yogesh Patil, and today we are going to learn to the next topic, that is event handling in interaction unit of computer graphics. Interactive programming in computer graphics generally takes advantage of the event handling capabilities of modern system. So, we must understand something of what events are and how to use them in order to write interactive graphics program. Events are fairly abstract and come in several varieties, so we will need to go into some details as we develop this idea. But modern graphics APIs handle events pretty cleanly, and you will find that once you are used to the idea, it is not particularly difficult to write event-driven programs. You should realize that some basic APIs do not include event handling. So it is sometimes necessary to use an extension to the API calls. For example, the OpenGL API generally uses the graphics library utility toolkit, that is GLUT, or a similar extension for event and window handling. अब ये जो इवेंट हैंडलिंग का कंसेप्ट है, इवेंट हैंडलिंग का कंसेप्ट क्या है? तो इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग बोलते हैं या फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जो बेसिकली ये कंसेप्ट का इंट्रोड्यूस हुआ है या यूज होता है, तो इसकी जो कैपेबिलिटीज है इवेंट हैंडलिंग की, जो भी हम हमारा जो भी टास्क है वो जो टास्क हम थ्रू द पर्टिकुलर हार्डवेयर कंपोनेंट्स या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स से परफॉर्म करते हैं, तो बेसिकली उस टाइप के वहां पे प्रोग्राम्स लिखे हुए रहते हैं जो प्रोग्राम के थ्रू हमें उस टाइप का इंटरेक्शन करना होता है। जैसा कि सिंपल हम कंसेप्ट लेते हैं माउस का, तो माउस के जो स्ट्रोक्स होते हैं, जो बटन के स्ट्रोक्स होते हैं, ऑन दैट स्ट्रोक्स देयर इज अ पर्टिकुलर एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द पर्टिकुलर इवेंट। तो ये जो कंसेप्ट है ये यहाँ पे यूज होता है। तो उस टाइप के अलग अलग ग्राफिक्स के अंदर मॉडर्न ग्राफिक्स के अंदर उस टाइप के कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। जो कंसेप्ट यहाँ पे दिए हुए हैं वो बेसिकली एपीआई के अंदर जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होते हैं वो इंटरफेस के थ्रू हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ग्राफिक्स लाइब्रेरी का यूज होता है, ग्राफिक्स लाइब्रेरी के अंदर उस टाइप की इवेंट यहाँ पे हैंडल होते हैं, विंडो हैंडल करने के लिए उस टाइप की कैपेबिलिटी यहाँ पे दी हुई है। तो सैंपल डिवाइसेस, अब ये सैंपल डिवाइसेस का जो कंसेप्ट है, ये सैंपल डिवाइसेस का कंसेप्ट क्या है? तो सैंपल डिवाइसेस का कंसेप्ट ये है, the locator is a sample device and therefore may be read at any time. There is no need to wait for an event to be placed on the event queue. We need only a routine which reads the locator and returns its x, y value. अब जो एक्स वाई वैल्यूज का हमारा जो कंसेप्ट है वो एक्स वाई वैल्यूज का कंसेप्ट किस चीज के लिए दिया हुआ है, बेसिकली वो हम लर्न करेंगे कि जो लोकेटर का कंसेप्ट दिया हुआ है, लोकेटर जो लोकेट करने के लिए हम यूज करते हैं। सो वी हैव अ सैंपल डिवाइस, we can read that particular coordinates. So there is a particular event, and for that event there is a number of actions that is in a queue. So by means of reading these particular values from that particular location, and we will return values of x and y. Since locators are sample devices, our simulations of a locator device, the current coordinate values are read from the device and returned. In a keyboard, simulation coordinate values will be read from the keyboard and returned. तो बेसिकली जो भी सिमुलेशन टेक्निक हम यूज करते हैं या पर्टिकुलर टेक्स्ट हम यूज करते हैं, वो टेक्स्ट के थ्रू हमें उसे क्या करना है, रीड करना है। जो भी सिमुलेशन प्रोसेस करोगे या लोकेशन की प्रोसेस करोगे, दैट इज ऑन अ सैंपल डिवाइस। तो सैंपल डिवाइस के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो पर्टिकुलर पोजीशन पे हम वर्क करते हैं, वो पोजीशन की वैल्यूज हमको क्या करना है, एक तो रिटर्न करना है या हमें उससे वैल्यू देना है बाय द कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप क्या कर सकते हैं, उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज द कंसेप्ट।
So for that purpose, they are having a particular algorithm that is for reading the locator, and we will read and return the values of x and y. So in this algorithm, we use some global variables like locator. The locator enable the flag. So start from the begin. If not locator, then return. If अगर लोकेटर वहां पे नहीं है तो we will return the error. So the locator not enabled here. Obtain x and y values from locator device or its simulation. कन्वर्ट टू नॉर्मलाइज डिवाइस कोऑर्डिनेट, जो भी नॉर्मलाइज डिवाइस कोऑर्डिनेट हम यूज करते हैं उसके अंदर उसे हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करना है, यानी जो हमारा सैंपल डिवाइस है और नॉर्मलाइज डिवाइस है उसके अंदर हमें उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है. कोऑर्डिनेट्स इफ नेसेसरी रिटर्न, अगर जो भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं वहां पे जो भी हमको लेना है, जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स है वो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एंड इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. So valuator are treated in essentially the same way as locator. यहाँ पे valuator का भी एक concept है. अब यहाँ पे हमने simulator का use किया, pick का use किया, locator का use किया, and the next one is that valuator. So यहाँ पे again जैसा हम locator का use करते हैं उसी टाइप से हम valuator का use करते हैं. One variable is written instead of coordinate pair. जो coordinate pair है उसकी value को क्या करता है, return करता है. So the next concept is that is detectability attribute. अब ये detectability attribute जो कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर फॉर द इंटरेक्शन टेक्निक के लिए हम यूज करते वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है. अब detectability attribute that is based on the peak, then locator, then sample device, then valuator. So on that basis we will use a detectability attribute. A useful feature for peak devices is the ability to set the detectability of portion of the display. We may wish to be able to pick an item from a subset of the items actually appearing on display. We want all other items of the display to be ignored by the pick device. This can be done by disabling the interrupt mechanism when portion of the display which we wish to ignore are being drawn. The interrupt mechanism is re-enabled when detectable items are being drawn. तो जो भी पर्टिकुलर पिक करना है या जो हमारा डिस्प्ले डिवाइस है, ऑन दैट डिस्प्ले डिवाइस जो भी हम कोऑर्डिनेट्स मेंशन करते हैं उसे पिकअप करने का काम या उसे उस टाइप से हमको उसको एक्सेस करने का काम है, जो डिटेक्ट करना है हमको, वो डिटेक्टेबिलिटी एट्रीब्यूट क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है एंड ड्रॉन करने का काम करता है. We would therefore like to present the user with some routine for setting the detectability of portion of his display. We can give segments a detectability attribute so that a segment may or may not be detectable by a pick device. We do this by giving each segment a detectability flag. We provide the user with a routine to set this flag to on or off. The default value would be off. The detectability flag may be checked by the display generating routines in a vector reference device to be disabled or enable light when interrupt. अब यहाँ पे जो सेगमेंट्स का कंसेप्ट दिया हुआ, सेगमेंट का कंसेप्ट किस चीज के लिए दिया हुआ है? अब सेगमेंट का कंसेप्ट जो दिया हुआ है वो सेगमेंट का कंसेप्ट बेसिकली जो पिक्चर होता है या इमेज होता है या उसका पर्टिकुलर जो रीजन होता है वो रीजन हमें क्या करना है, उस सैंपल डिवाइस पे डिस्प्ले करना है. अब जब डिस्प्ले करते टाइम पे उसकी जो पर्टिकुलर पोजीशन होती है, जो भी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स होती है वो कोऑर्डिनेट उस पे डिटेक्ट करना है एंड देन वी विल ड्रॉ दैट पर्टिकुलर इमेज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज. और हम बोलेंगे यार रीजन में अब उसकी जो भी सेटिंग है या जो पर्टिकुलर पोर्शन हम जो डिस्प्ले करने वाले हैं वो जो सेगमेंट्स की जो वैल्यूज होती है या डिटेक्टेबिलिटी एट्रीब्यूट का जो कंसेप्ट होता है उस सेगमेंट को डिस्प्ले करने के लिए बेसिकली हम जो भी पर्टिकुलर रूटीन यूज करते हैं उसमें इंटरप्ट भी आ सकता है, वैल्यूज जो है ऑन है तो वो डिस्प्ले होगी, ऑफ है तो नहीं होगी, जो भी पोर्शन डिस्प्ले करना है वो डिस्प्ले होगा और जो नहीं करना है वो नहीं होगा. सो दैट कंसेप्ट इज दैट इन दी डिटेक्टेबिलिटी एट्रीब्यूट. For other simulation, the flag can still be used to determine whether a segment is a candidate for a pick. अब ये जो सेगमेंट है वो सेगमेंट हमें जो यहाँ पे डिस्प्ले करना है ऑन दैट पर्टिकुलर डिस्प्ले डिवाइस, तो जो पर्टिकुलर सेगमेंट है वो कैंडिडेट है क्या उस पर्टिकुलर पिक के लिए वो चेक करना है. एंड एग्जांपल इज दैट अबो अवेट इवेंट
यहाँ पे एक algorithm दिया हुआ है await event routine for sample peak simulation in the case where a peak for a particular segment is simulated by a keyboard. The detectability flag for that segment is checked by the await event routine. If the segment turns out not to be detectable, then another input is requested if the segment is detectable. Then its name is saved and await event returns indicating that valid that is reach has occurred. So that is basically concept is that जो ये peak has occurred जो हम बोल रहे हैं वो peak के basis पे हम उसको क्या करना है यहाँ पे यूज करना है उसके लिए particular event हम यूज कर रहे हैं और through this particular event हम वो particular detectability activity यहाँ पे क्या करते हैं perform करते हैं. If actual interrupt are used for this, then the main picture current or interrupt routine should be extended to include enabling and disabling of interrupt according to the detectability flag. For the segment being interrupted, the following algorithm allows the user to set the detectability attribute. तो यहाँ पे एक algorithm दिया हुआ है. Through this algorithm हम जो भी particular detectability attribute का जो concept है हम यहाँ पे set कर सकते हैं. तो जो algorithm दिया हुआ है that is for the segment के लिए हमने previous unit के अंदर segment को learn किया था. वही concept यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे क्या किया है introduce किया है. तो algorithm is that is for the set detectability. Then in this algorithm there is a segment name and on off that is the particular detectability routines attributes we set to that particular segment. So the arguments are that segment name that is for the display file segment being set on off the detectability setting. In this algorithm there is a global variable that is detectable that is the detectability attribute array constant number of segments the size of the detectable array. In this algorithm we start from begin if segment name is less than 1 or segment name is greater than number of segment then return error. अब ये अगर कंडीशन यहाँ पे अगर अनसेटिस्फाई होती है तो हम वहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे रिटर्न करेंगे एरर रिटर्न करेंगे. So for this invalid segment, so the detectable segment name is assigned to on or off that is return this value and in this algorithm. So this is the algorithm for the detectability attribute. We have added a new segment attribute. This means that our routine which manage the segment table must be extended to include this new property. There are two routines which must be changed. The create segment routine which initialize all attributes and the rename segment routine which copies all attributes to a new position in the table. So this is basically detectability attribute in computer graphics that is in interactive technique. So thank you student for watching this video. Thank you.